Hello 8th standard students, welcome back to our channel Vidyarthi. We are discussing the worksheet 6 of a mensuration lesson, that is the volume of a right circular cylinder. Now the question number 8, two solids of right cylindrical shape are 49 centimeter and 35 centimeter high. Means two cylinders are there and the height of first and second is given, and the base diameters of the first and second, that is 16 centimeter and 14 centimeter respectively. Now both are melted and molded into a single cylinder, that is 56 centimeter high. Now find the base diameter. They have asked the diameter. So what we have to do is first, this is not the volume they had asked, so we have to find out the diameter. So little bit tough. Okay, the two solids, the first cylinder, the height is given as h1 49 centimeter, the diameter, that is d1, is equal to 16 centimeter. समझ में आ रहा है? दो सिलेंडर्स है, इसके लिए फर्स्ट सिलेंडर सेकेंड सिलेंडर ऐसे ही लिखो और दोनों के वैल्यूज जो भी दिया है लिखो. सो h1 49 सेंटीमीटर एंड द d1 16 सेंटीमीटर. तो नाउ r1 will be 16/2 is equal to 8 centimeter. Now the volume of the first cylinder we have to find. Then the second cylinder, what are all given? H2 is 35 centimeter and D2 is 14 centimeter. So R2 will be 14/2 is 7 centimeter. Now volume of the second cylinder. Because we are not directly finding the volume of the new cylinder, so we have to find out like this. So it will be better because height, everything, it is different. So 22/7, volume of the first cylinder V1 is equal to pi R1 squared H. So 22/7 R1 squared. R1 is 8 into 8 and H, that is 49. Now 7 7s are 49. So you will be getting, multiply करोगे तो आपको आएगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब. Multiply 22 into 8 into 8 into 7. You get 9856 centimeter cube. Now for the second cylinder, V2 is equal to pi R2 squared H2. So it is 22/7 into R2 is 7. So 7 we have to write 2 times and H2 is 35. So it will be better 7 5s and now multiply all these, you will get 5390 centimeter cube. 5390. So volume of the new cylinder, it is melted and then you get the new cylinder. इसके लिए दोनों का वॉल्यूम को ऐड करो. सो 9856 प्लस 5390. 6 plus 0 6, 9 plus 5 14, 1 plus 8 9, 10 12, 1 10 plus 5 15. So you got 15,246 centimeter cube. Volume mila. So new cylinder volume you got 15,246 centimeter cube, and now they have told the height is 56 centimeter. They have asked to find out D, how much. D के लिए पहले R फाइंड आउट करने का है.
तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू डालो, 15246 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 56। ओके, नाउ 7 1s 7 8s 56. So r squared is equal to 15246 upon 22 into 8 है ना, 22 into 8। अभी आप लोग ये देखोगे तो इधर आएगा 22, 11 के टेबल में जाएगा क्या, देखो इधर 11 से जाएगा तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 5 + 4 9, so it is divisible by 11। 11 2s are 11, 1s are 11, 4 remains, 11 3s are 33, so you will get a 9 remains, it will be 8s are 88 and 6 will remain, so 6, 2 1s are 2 6 are 12, 1 remains, 9s are 18, 3s are, now it is not divisible, 6 9 3 upon 8, so you will get, when you divide you will get 86.625, 86.625, r squared is so much, so r will be square root of 86.625। आप लोगों का लॉन्ग डिवीजन मेथड मालूम है ना, वो स्क्वायर रूट के लिए वो वाला करके देखो, सो यू विल गेट 9.3, r is 9.3, that is a centimeter। now d is equal to 2 into r, that is 2 into 9.3, 2 3s are 6, 2 9s are 18, you got 18.6 centimeter। so answer, the diameter of the base of the given cylinder is 18.6 centimeter। to do that, इधर डिवाइड करने के वक्त डेसिमल लेकर करो, you will get the 86.625, then the square root find out, you will get 9.3। little bit lengthy sum, okay, this is the 8th sum। now coming to the 9th, सबको समझ में आया? तो दो सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, थर्ड न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो जो मिलता है वो, लेकिन इधर उनका वो नया सिलेंडर का डायमीटर पूछे हैं, इसके लिए पहले रेडियस फाइंड आउट करो फिर डायमीटर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 9th sum, the volume of the metallic cylindrical pipe, it is a pipe, is given, length is given and the external radius is given, and now find the thickness। पहले में आप लोगों को वॉल्यूम फाइंड आउट करने को बोले थे, ट्यूब का वॉल्यूम, लेकिन इधर वॉल्यूम दिया है और एक्सटर्नल रेडियस मीन्स आउटर रेडियस दिया है, थिकनेस पूछा है,
तो तभी इनर रेडियस पहले फाइंड आउट करने का, तभी आपको थिकनेस मिलेगा, है ना। सो ये वाला सम ट्यूब का है ना। चलो क्या क्या दिया है, आउटर रेडियस, ये आउटर रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर। थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए, इनर रेडियस फाइंड आउट करने का, लेंथ 14 सेंटीमीटर। We'll write shape, it is cylinder. Now volume is given. वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इजी है ये मेथड में, वो लंबा वाला आउटर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस द वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर, वो वाला मेथड यूज करने का। इधर पाइप है, याद रखो, वॉल्यूम इज गिवन 748 सेंटीमीटर क्यूब, द लेंथ means height is equal to 14 centimeter, then outer radius, external radius मतलब outer radius, that is R1 is equal to 9 centimeter. They have asked you to find out thickness is equal to how much, but for that we have to find out inner radius is equal to how much. पहले क्या क्या फाइंड आउट करने का वो सोचो। तो अभी इनर रेडियस आउटर रेडियस आते ही आपको ये वाला मेथड यूज करने का। वॉल्यूम ऑफ अ मेटालिक पाइप, metallic pipe is equal to volume of a outer cylinder minus volume of a inner cylinder. फिर फॉर्मूला डालेंगे तो पाई आउटर के लिए R1 स्क्वायर्ड H और इनर रेडियस के लिए हम R2 डालते हैं ना, माइनस पाई R2 स्क्वायर्ड H। ऐसे वाले सम अभी 2-3 किए हैं तो अभी तो कॉन्फिडेंस आया होगा। पाई H इज कॉमन, R1 स्क्वायर्ड माइनस R2 स्क्वायर। अभी वॉल्यूम दिया है, कितना है वॉल्यूम 748। अभी वैल्यूज डालने का, 22/7, H इज 14, ब्रैकेट के अंदर आउटर इज 9 स्क्वायर माइनस R2 हमें फाइंड आउट करने का। चलो 7 1s 7 2s, so it will be 748 upon 22 into 2 is equal to 9 squared is 81 minus R2 square. It is a 2 1s 2 3s 6, 1 remains, 7s 14, 2 4s 8. Now 3 plus 4 is 7, 7 minus 7 is 0, 11 में जाएगा, 11 2s 11, 3s 33, 34, 35, 36, 37, 4 remains, so 4s 34s 44, 2 1s 2, 17s 34, isn't it? 2 1s 2, 1 remains 7. So it is a R squared minus R squared is equal to 17 minus 81. So minus R squared is equal to, you get minus बड़ा है ना, 1, 11 minus 7 is 4. Now 7 minus 1 is 6.
So minus minus gets cancelled. That means r squared is equal to 64. So r is equal to square root of 64. Therefore r is equal to 8. r is equal to 8 सेंटीमीटर. समझ में आया? सो माइनस आर स्क्वायर 81 को इस तरफ लेकर आने के वक्त माइनस. So 17 minus 81 is minus r squared. So minus r squared is equal to minus 64. है ना? 81 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा. So minus minus get cancelled. R squared is equal to 64. So r is equal to square root of 64. So inner radius मिला. So inner radius, that is R2, sorry R2 squared है ना सब जगह. R2 is equal to 8 centimeter. Now thickness is equal to, outer radius कितना है? Outer radius minus the inner radius. आउटर रेडियस कितना बोले हैं? 9 minus 8, that is 1 centimeter. So answer, thickness of the tube is 1 centimeter. Same like the volume, to find out the volume, but here the calculation is little bit different. Is it clear? From here onwards it is different. So thickness के लिए outer radius minus the inner radius. Now coming to the 10th sum, the volume of the cylinder is given and the height is given. Find the area of the total surface and the lateral. See, volume of the cylinder is given, height is given, and find out the TSA and the CSA. First write the solid is a cylinder. Volume is given, but it is given in 150 pi cubic centimeter. Write it like that only. H is given as 6 centimeter. Now they have asked you to find out TSA is how much and CSA how much. But for both we want R. तो पहले क्यूब क्यूबॉइड में कैसे किए वैसे ही वॉल्यूम होगा, TSA, LSA, CSA कुछ भी फाइंड आउट करने का. First we want the R, isn't it? चल, now it is a volume of a cylinder. First find out R is equal to pi R squared H. Volume is 150 pi is equal to pi R squared. H is a 6. Now R squared is equal to 150 into pi. 150 pi मतलब 150 into pi. The pi will come here and 6 also will come to the left. इधर पाई 22/7 लिखने को जाओ मत, क्योंकि पाई पाई गेट्स कैंसल्ड. 6 1s are 6 2s are 12, 3 remains, so 5s are 30. So you got R squared is equal to 25. So R is equal to square root of 25, that is 5 centimeter. So you got R. So hope you understood. Pi जब ऐसे रहेगा so उसका वैल्यू डालने को जाओ मत, डायरेक्टली कैंसिल करो. Now TSA, that is total surface area of cylinder.
What is the formula? Remember, 2 pi r plus h. Hope you remember from the earlier worksheets, isn't it? Now 2 into pi is 22 by 7. R you got 5, bracket 5 plus h is 6. So 2 into 22 by 7 into 5 into 5 plus 6 is 11. So when you multiply, you will get all these, when you, no cancellation. So 2, 4, 2, 0 upon 7. When you multiply, you will get it is 2 5s are 10, 22 11s are, it will be 242 and 0. 11 2s are 22, 11 2s are 22 plus 2, 24, 2 5s are 10. Okay. Now 7, how much are 24? 3s are 21, 3 remains. So it is 4s are 28, so 4 remains. Now 5s are 35, so extra you take 5. So 7, 7s are 49. अगर लेंगे तो 1 आएगा, so it won't be. So 345.7 centimeter square. It is centimeter square, remember. Now it is CSA, curved surface area of cylinder. Formula क्या है, याद है? CSA का, it is a 2 pi RH. That is 2 into pi is 22 by 7. R is a 5 and H is 6. Multiply karo. It is a 44 into 30. So 3 4s are 12. 3 4s are 12 plus 1 13 upon 7. 7 1s are 7. 6 remains. 7 8s are 56. So again 6 remains. 8s are 56. 56. So 4 remains. Take extra 0. 7 5s are 35. 5 remains. Now it is 7s are 49. That means 188.6. 7 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. So it is 188.6 centimeter square. Hope you understood this calculation. So first find out R and then find out the TSA and the CSA. It's easy, isn't it? Now coming to the last sum, the curved surface area is given and its volume is given. Find the diameter and the height. Okay, it is a cylinder. Now CSA is given. CSA is equal to 2464 meter square and volume is given 924 meter cube. अभी इसके फॉर्मूला डालेंगे. CSA मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 pi RH is given as 264 meter square. वॉल्यूम में दिया है pi r squared h is 924 meter cube. अभी हमें डायमीटर के लिए रेडियस और हाइट दोनों चाहिए. देखो वॉल्यूम और CSA दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है और हमें डायमीटर और हाइट फाइंड आउट करने का. डायमीटर के लिए पहले रेडियस. तो इसके लिए क्या करने का है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस डिवाइड बाय
the CSA of a cylinder. ऐसे करने का है। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 2 पाई आर एच. दैट मीन्स पाई इंटू आर इज 2 times एच अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच. अभी कैंसल क्या होगा, पाई कैंसल होगा, आर कैंसल होगा, एच कैंसल होगा, है ना. तो क्या बचा हमें, बचा आर बाई 2, आर बाई 2. पाई got cancelled, 1 r from the numerator and r from the denominator. H also got cancelled. So r by 2 वॉल्यूम का कितना है, 924, और CSA कितना दिया है, 2 पाई आर एच 264. समझ में आ रहा है. वॉल्यूम ऑफ बाई CSA करेंगे तो इतना, आप लोग कैंसल करने के वक्त आपको मिला r बाई 2 इज इक्वल टू 924 अपॉन 264. सो r इज इक्वल टू, इधर से 924 अपॉन 264, और ये 2 जाएगा न्यूमरेटर में, है ना. अभी कैंसलेशन करो, 2 1s 2 1s 2 3s 2 2s. Now it is 11 में चेक करो जाएगा क्या, 1 plus 2 3 and 3 minus 3 is 0. 9 plus 4 9, 10 11 12 13. 13 minus 2 is 11. So 11 का either it should be 0 or 11, ऐसे है ना. So 11 1s 11, 2 remains, 11 2s 22. Now 11 8s 88, 88 89 90 91 92, 4 4s 11 4s 44. Now 12 1s 12 8s, sorry 12 7s 84, 12 8s 96, 7s 84. You got 7. R is equal to 7 meter. Did you understand? So when you divide volume of the cylinder upon CSA of the cylinder, you will get R. So you got radius is equal to 7 meter. Therefore diameter is equal to 2 into 7, that is 14 meter. Got one answer. Now find out the height. So you can put either volume or CSA. So CSA of a cylinder, formula क्या है, 2 pi r h. So CSA कितना दिया है, 264. 2 into 22/7, और r अभी मिला हमें 7 and h. This gets cancelled. So h is equal to 264 upon 2 into 22. 2 plus 4 6, 6 minus 6 is 0. 11 2s 22, 4 remains 4s. 2 1s 2 12s 2 1s 2 6. So you got h is equal to 6 meter. Understood? So when CSA and volume is given,
They have not given anything else. They have asked you to find out either the radius or the diameter and then height. To find out diameter, first you have to find out the radius. So, follow this method. So, answer: diameter is equal to 14 meter and the height is 6 meters. So, we have completed the worksheet 6. Last few sums are little bit tricky. Please understand the method and please write one time, understand the sums and write one time, and after that write the revision on your own so that you will be confident of the sums. Revision is required. Okay, bye. Thank you. All the best.